some revision questions of chapter number system for class 9th. Okay, the first question is the number root 8 plus 3 root 7 is equal to 8 plus root 7 by root 2, 8 minus root 7 by root 2, 2 plus 2 root 3 plus 3 root 7 or 2 root 2 3 root 7. Which one is equal to this? Root 8 plus 3 root 7. अब यहाँ पर चार ऑप्शन है. 8 प्लस रूट 7 बाई रूट 2. देखिए इसको जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज. सिर्फ रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो सकता है? 8 रूट 2 रूट 14 बाई 2. तो इट इज नॉट इक्वल टू दिस. सेम हियर इफ वी वांट टू रेशनलाइज तो वी गेट 8 रूट 2 माइनस रूट 14 बाई 2. इसको भी हम लोग क्या किए? रेशनलाइज. मल्टीप्लाई रूट बाई रूट 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. थर्ड वन इज 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 7. इसको कितना भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसके अंदर ले जाएंगे, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा. एंड द लास्ट वन देखिए 2 रूट 2. 2 रूट 2 को हम लोग कह सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 अंदर चला जाएगा रूट के, तो ये 2 अंदर आएगा 2 इंटू 2. और 3 रूट 7 ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में, हमको इसको कुछ नहीं करेंगे. तो इट इज इक्वल टू द रूट 8 प्लस 3 रूट 7. इट मीन्स रूट 8 प्लस 3 रूट 7 इज इक्वल टू द 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 7. दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of 7 raised to power 1 by 2 into 8 raised to power 1 by 2. The question is 7 raised to power 1 by 2 into 8 raised to power 1 by 2. Use the property a raised to power m into b raised to power m. Bases are same and exponents. Bases are different but the exponents are same. It means the value of this is a into b raised to power m. ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी. अगर दोनों के बेस अलग हैं, पावर दोनों की सेम है, तो हम लोग बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे. जो ऑपरेशन यहाँ होगा वो हम कर दिए हैं. तो ये क्या हो गया? 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1 बाई 2. इट इज इक्वल टू द 56 रेज टू पावर 1 बाई 2. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is the rationalize the denominator of 1 upon 7 minus 3 root 2. 1 upon 7 minus 3 root 2. For rationalizing the denominator, first we multiply its rationalizing factor. Rationalizing factor is 7 plus 3 root 2. Now multiply in numerator and denominator by 3 root 2. 7 plus 3 root 2. 7 minus 3 root 2. 7 plus 3 root 2. Now the numerator is 7 plus 3 root 2. And the denominator is a minus b, a plus b. It is equal to the a square minus b square. It means 7 plus 3 root 2 by 49 minus 3 root 2 square is 39 into 2. 9 into 2, 18. Okay, now subtract 7 plus 3 root 2 and it is equal to the 31. Question number 4, simplify रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1. इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं. या तो इन दोनों को अलग अलग रेशनलाइज करके ऐड कर दें, अदरवाइज जस्ट एज ए फ्रैक्शन. टेक एलसीएम ऑफ दीज टू. रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1. रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1. जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा रूट 2 plus 1 whole square and here is root 2 minus 1 whole square. Now simplify 2a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. It means 2 root 2.
and in this 2 plus 1 minus 2 root 2 and divided by okay 2 root 2 cancel, 3 plus 3 6 and the denominator is 1. 2 minus 1 is 1. The answer is 6. Okay. Question number 5. Find the value of under root 4.9 under root 4.9 on number line. How to construct? First we draw a line of 4.9 centimeter, inch, anything. Okay, I am taking 4.9 AB, length of 4.9 centimeter or the meter, oh sorry, meter nahi, centimeter or the inch you can take. Okay, अब just increase 1 centimeter against 4.9 plus 1. Take this point C. Now perpendicular bisect line AC. How to bisect? This is a perpendicular bisector. Take 2 points P and Q. This point P and this is Q. Join PQ by dotted lines. We get the center of this line AC, O. This is the center O. Now make a semicircle by taking center O. OA as a radius. Now the point P, draw a perpendicular. Perpendicular means 90 degree angle. This is a point D. Increase the number line because we have to draw the under root 4.9 on number line. Take BD as a radius, cut an arc which meet at the number line point E. The distance be equal to under root 4.9. This is the construction of under root 4.9. Okay. Question number 6. Write the following in ascending order. 3 raised to power 1 by 4, 2 raised to power 1 by 3, 4 raised to power 1 by 3. Arrange in ascending order. It is the 3 raised to power 1 by 4, 2 raised to power 1 by 3 and 4 raised to power 1 by 3. Now the LCM of 3 and 4 is 12. So just we can write 3 by 12. 1 by 4 हो जाएगा 3 by 12. This one we can write 4 by 12. 4 raised to power 4 by 12. And simplify. Write in radical form. 12 3 cube. 12 2 raised to power 4. And 12 4 raised to power 4. Now 3 raised to power 3 is 27. This one is 16 and this is 256. 4 raised to power 4. Now we can arrange easily in the ascending order. तो सबसे छोटा नंबर ये क्या हो जाएगा 12, 16. इसके बाद क्योंकि पावर तो दोनों सभी की सेम है 27 और ये हो जाएगा 256. नाउ यू कैन राइट ओरिजिनल नंबर. ये क्या ओरिजिनल नंबर है? क्यूब रूट ऑफ 2. ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा 4th ऑर्डर ऑफ 3 and it is cube root of 4. These are in ascending order. Now the question number 7. If a equal to 2, b equal to 3, then find the value of the following. A raised to power b plus b raised to power a raised to power minus 1 and a raised to power a plus b raised to power b raised to power minus 1. Find the value of a raised to power b
just put the value of 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2. It is equal to the 8 and 9. Okay. 17 raised to power minus 1. The value of this is 1 by 17. And the second one is a raised to power a, b raised to power b minus 1. A raised to power a means 2 raised to power 2 and 3 raised to power 3. (31 raised to power minus 1). It is 1 by 30. Okay. Now question number 8. The question number 8 is, if a raised to power x equal to b, b raised to power y equal to c and c raised to power z equal to a, then prove that x. In question number 8, it is given that a raised to power x equal to b and b raised to power y equal to c and c raised to power z equal to a. Okay, so we are given that. So first, from first, second and third. From first, a raised to power x equal to b. Now give the power of y on the both sides. Okay, raising both sides to power y. It is equal to the a raised to power xy equal to b raised to power y. From 2, b raised to power y equal to c. It means a raised to power xy equal to c. Okay. Next, raising to the power z. A raised to power xy, taking the both side power z. A raised to power x by z equal to c raised to power z equal to a. यहाँ लिख देंगे from थर्ड. तीसरे से क्या पता चला? c raised to power z equal to a. Now equating the both side power. Now bases are same, therefore the power x by z equal to 1. This is the solution of question number 8. Question number 9. If a equal to 8 plus 3 root 7 and b equal to 1 by a, then what will be the a square plus b square? A equal to 8 plus 3 root 7 and b equal to 1 by a. It means 1 upon. Okay. Now rationalize the denominator, multiplying 8 minus 3 root 7 in both numerator and denominator. We get 8 square minus 3 root 7 square. B equal to 8 minus 3 root 7 by 64 minus 63. It means 8 minus 3 root 7. Okay. Now find the value of a square plus b square. It means a square plus b square equal to 8 plus 3 root 7 whole square and 8 minus 3 root 7 square. Now expand the formula of a plus b whole square and a minus b whole square. A square plus b square plus 2ab. 2 into 8 into Jinny. गंदी बात हटो, जल्दी काम करने दो, जाओ. जिन्नो डिस्टर्ब नहीं करो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab. This term is the same, cancel, and 64 plus 63 and 64 plus 63 add. Okay, it is 127 into 2 into 127 equal to 254. Evaluate root 5 plus root 3 upon root 5 minus root 3 given that root 15 equal to 3.87. The question is root 5
plus root 3 upon root 5 minus root 3. Okay, now first rationalize root 5 plus root 3 multiplying in numerator and denominator. Root 5 plus root 3 is a rationalizing factor of this irrational number. Multiplying root 5a plus b whole square. So root 5 square plus root 3 square, 2 root 5 into root 3 is root 15. And a square minus b square. It is 8 plus 2 root 15 by 2. Take common 2. 4 plus root 15 by 2. 2 cancel. It means 4 plus root 15. The value of root 15 is 3.87. The answer is 7.87. Okay. Now question number 11. Locate root 10 on number line. How to draw Okay, question number 11 under is root 10 on number locate real root 10 line. on Okay. number. The root 10 by using Pythagoras theorem, we take base as the 3 and height is 1. The square of 3 is 9 plus 1, it is equal to 10. So therefore taking a point O on real line or the number line, OA is equal to 3 units. Okay. Now make a perpendicular on A of 1 unit. Perpendicular means 90 degree. It is of 1 unit. This point B, AB equal to 1. Join OC. OB, join OB and take OB as a radius. Draw an arc which meet at number line at point C. Okay, so this OC equal to root 10. OC distance equal to root 10. The question is locate root 10 on real line. It means this is the construction of root 10. Okay. Insert 8 rational numbers between 2 and 3. Okay. Question है insert 8 rational numbers between 2 and 3. Okay. तो insert करना तो हम लोग 2 and 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिखेंगे 20/10 and 3 को लिखेंगे 30/10. We can insert as many as rational number between them. तो डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग. फर्स्ट 21/10, 22/10, 23/10 और भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है. 24, 25/10, 26/10, 27/10 and 28/10. These are the 8 rational numbers between 2 and 3. Okay. Question number 13. Classify the following numbers as rational or irrational with justification. Okay. Classify root 196 equal to the 14. Clearly it is a rational number. Three root 18. By simplifying we get root 18. We can write 3 into 3 into 2. Okay. So we can write 9 root 2. Root 2 is an irrational number, therefore this number is irrational number. Next one, root 9/27. It is equal to the 1/3. Under root 1/3 means 1 by root 3. Rationalize the denominator, then we get root 3/3. Clearly root 3 is an irrational number, therefore it is a irrational number. Next, minus 0.4. इसको भी निकालेंगे, ये भी क्लियरली इरेशनल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी पूरा नहीं निकलेगी. अगर ये 4 होता तो भी निकल जाता, लेकिन 0.4 इसको हम लोग जब वैल्यू फाइंड करेंगे
तो 0.40, और ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल है. दिस वन इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल, नन टर्मिनेटिंग and none recurring decimals. Therefore, it is an irrational number. And the last one is 10.124124. It means it is equal to the 10.124 bar. This one is repeating 124124. So we can convert in the form of rational number like this. If x equal to, now multiply by 1000, we get and subtract this one is 999x equal to 1104. And x equal to 10104 by 999. इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कैंसिल कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ए रेशनल नंबर. क्लियरली बार नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स. ओके. द क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाई 0.5 बार प्लस 0.2 बार एंड अगेन इज 0.4 बार प्लस 0.18 बार. ओनली 8 पर बार है. 0.5 बार प्लस 0.2 बार. जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 5/9 एंड इट इज इक्वल टू द 2/9. बाय यूजिंग दिस मेथड यू विल गेट दिस. इट इज इक्वल टू द 7/9 और 7/9 इज ऑल्सो इक्वल टू द 0.7 बार. ओके. एंड द सेकेंड वन इज 0.4 बार प्लस 0.18 बार. तो ये क्या हो जाएगा? 4/9. और इसको हम लोग क्या चेंज करके लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर करते हैं. x इक्वल टू 0.1888. फिर हमको यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का. तो 10x क्या हो जाएगा? 1.888. और फिर 100x, इट मीन्स 18 इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90x इक्वल टू 17. x इक्वल टू 17/90. तो वी कैन राइट हियर 17/90. नाउ टेक 90 LCM. 40 प्लस 17. इट इज इक्वल टू द 57/90. ओके. 57/90. And the last question is find a point corresponding to the construction of 3 plus root 2. हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें 3 यूनिट्स डिस्टेंस पहले ले लेंगे. यहाँ पर पॉइंट ओ लिए, इससे 3 यूनिट दूर एक पॉइंट ले लिए. ओके. पॉइंट ए. From A, take 1 unit distance. AB equal to 1. Draw a perpendicular on B of 1 unit. This is a construction of root 2. This is equal to 1. Now join AC. AC equal to root 2. By using Pythagoras we can find 1 plus 1 root 2. Take AC as a radius, cut an arc, okay, which meet in the real line at point P. So AC equal to root 2 means AP equal to root 2 and OP equal to 3 plus root 2. O से लेके P तक कितना हो जाएगा? 3 plus root 2. It means this is a construction of 3 plus root 2. Thank you.